हाँ, हम लोगों ने इन द लास्ट क्लास वी डिड weak acid and weak base type, ना, salt hydrolysis of weak acid and strong base type, KCN, NaCN, K2CA3, BaCO3. What is left? Salt of weak acid and weak base is left, है ना कनिष्का? क्या हुआ? यस सर, आज माइक गड़बड़ हो गया क्या? माइक गड़बड़ हो गया क्या कनिष्का आज? अच्छा, क्यों, ध्यान से नहीं रखा क्या आप? ये हेडफोन कहाँ रख दिया है? सर राधिका ने ज्वाइन कर लिया, मतलब पता है, राधिका आ रही है। पता नहीं, उस ज्वाइन तो करना चाहिए उसको, लेकिन उसने अभी तक किया नहीं है। मे भी, क्या पता जो थोड़ी बिजी होगी। क्यों, वो होगा ना। अच्छा, गणेश गणेश चतुर्थी की वजह चतुर्थी। से? हाँ। हाँ, तुम भी मना रहे हो क्या गणेश चतुर्थी? नहीं सर, हम्म। हम तो नहीं बनाते, वो तो मुंबई साइड में ज्यादा बनता है। हाँ हाँ, वही ज्यादा होता है ना ये हो सकता है। ये सर यहाँ तो हल्की फुल्की पूजा कर देती है मम्मी, और थोड़ा जल वगैरह चढ़ा देती है। मेरे यहाँ तो कोई करता नहीं है इतना ज्यादा। छुट्टी चली जाती है हमारी है। नहीं, वहां पे अगर तो सर यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा होता तो शायद आज छुट्टी मिल जाती गणेश चतुर्थी की। मैं सोच रहा था तुम लोगों की छुट्टी कर दूं क्या आज। मैंने कहा नहीं सर, करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि स्कूल की छुट्टी नहीं है। स्कूल की छुट्टी मैं नहीं तो है ना। से नहीं, मेरे से घर वाले पूछने लगे कल स्कूल जाना है या नहीं, मैंने बोला कल स्कूल है, कोई छुट्टी नहीं है। महाराष्ट्र वगैरह में बहुत होता है, महाराष्ट्र में तो पूरे वीक, यानी लोग पूरे वीक छुट्टी रहती है। ये जो ये होता है ना पूरा, फिर उसके बाद जब तक उसका विसर्जन नहीं हो जाता है तब तक तो ज्यादा ही होता है। यस सर। हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ क्या होता है। अच्छा, जो त्योहार हमारे यहाँ होते हैं वो वहाँ भी होते हैं, महाराष्ट्र में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे गणेश पूजा कुछ ज्यादा ही होती है। अच्छा, इसी तरह से पता है तुम्हें, साउथ में एक वो होता है पोंगल। आंध्र प्रदेश वगैरह साइड में, आंध्र प्रदेश है तुम्हारा, कर्नाटका है यहाँ पे, वहाँ पोंगल में 3-4 दिन की छुट्टी देते हैं स्कूलों में, हमारे यहाँ नहीं देते हैं। यस सर। सर यहाँ पे जैसे दिवाली की मिलती है। हाँ, वहाँ दिवाली की नहीं मिलती है। वहाँ पता है दिवाली की भी नहीं मिलती है छुट्टी, पता नहीं कैसे। और वहाँ पे पता है ये सब त्योहार भी नहीं मनाए जाते, अपन जो लोग मनाते हैं ना ये राखी और ये होली भी इतना नहीं मनाते, पता नहीं हल्का फुल्का सा ही मनाते हैं। कहीं कहीं पे जहाँ नॉर्थ इंडियन कम्युनिटीज होगी ना, वहाँ पे वो लोग मना लेते हैं, नहीं तो बाकी लोग नहीं मनाते। वो लोग एक काम जरूर करते हैं साउथ में, जो भी कोई त्योहार होगा ना, फेस्टिवल होगा, वहाँ पे रंगोली बना लेंगे घर के बाहर। अच्छा, ये करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है राधिका भी वही मना रही है। देखते हैं, या तो अभी आज शाम को वो भी तो है मैथ्स की क्लास तुम्हारी, देखते हैं उसमें भी ज्वाइन नहीं करेगी तो इसका मतलब भाई वो फिर वही मना रही है। या फिर उसके साथ दूसरा पीएस भी हो सकता है, हो सकता है स्कूल से आते समय लेट हो गई हो। हाँ सर, आप बोलते लाइक कई बार वो मिस कर देती क्लास में। हाँ, क्योंकि वो उसको स्कूल की छुट्टी होने के बाद ना, ये जो पीरियड है ना अपना, ये वाला क्या नाम है, हाँ। बारिश वाला, इस समय जो चल रहा है, इस सीजन में ट्रैफिक होता है बहुत। तो उस अच्छा तभी। ट्रैफिक में फंस जाती है वो। पर यूजुअली ओ। वो मुझे मैसेज कर देती है ऐसे केस में, लेकिन आज किया नहीं है।
अभी तक मैसेज भी नहीं देखा है उसका। तो मुझे लगा बेबी स्कूल से आने से लेट हो गया होगा हाँ, इसको। हो सकता है। वो खैर भी इसी, क्या मुंबई साइड से? हाँ शायद वहीं से। क्या पता गणेश चतुर्थी भी बना रही हो। बट तो मैसेज तो देख लेती। ठीक है हाँ सर, हम मैसेज भी कल। नहीं देखा, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ये सब ठीक उनका है आयोनिक इक्विलिब्रियम है। अभी तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? सर, आजकल तो रिडॉक्स रिएक्शन करा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कराएंगे, इक्विलिब्रियम स्टार्ट नहीं हुआ इसका मतलब। नहीं मतलब अभी सिलेबस खत्म करा रहे हैं जो जो एग्जाम में आ रहा है। ये भी तो इक्विलिब्रियम भी तो है सिलेबस में, उसके बाद होगा शायद। पर पता नहीं। इसके बाद अपन रिडॉक्स वगैरह कर लेंगे। ओके सर। अच्छा देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में क्या था, ये तो हमारा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में क्या है, इसके एग्जांपल्स ले लेता हूँ मैं। एग्जांपल्स आर NH4CN, CaCO3, NH4 twice CO3, ZnHPO3। वीक एसिड वीक बेस फॉर एग्जांपल बताता हूँ देखो, क्योंकि NH4CN है, दिस इज मेड अप ऑफ NH4OH and HCN. NH4OH is weak base and HCN is weak acid. देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हम what we know by now, till now we know, whenever we hydrolyze something, we actually do what? When we hydrolyze something, uh, in the solution, only strong base and strong acids, they get dissociated initially. They get completely dissociated. But what about weak base and weak acid? We have learned weak acid and weak base, they dissociate according to their own terms, according to their uh, Ka, equilibrium constant, है ना? They follow the Ostwald dilution law. But here both are weak acid and weak bases. In that case, what we do? We do not dissociate them. So how the equation is made? NH4CN is the, let me write the basic equation with the red color, pink color. The initial equation of the hydrolysis will be NH4CN plus H2O. This will give NH4OH plus HCN. Now, in the solution, this NH4CN, because it is a salt, it will break into NH4 plus CN minus plus H2O. And further, there won't be any breaking because they both are weak acid and weak base. This is one equation. For this, if we form the equation of KH, K hydrolysis constant, it will be NH4OH into HCN whole divided by NH4 plus into Cn minus. Okay, sir. So if the weak acid and the strong acid, like, sorry, strong acid and weak base are just like reacting together, then I guess it can break or Then not. strong, in that case, when you are telling about strong acid and weak base, na? In that Yeah. case, strong acid will break. In this equation, if the strong acid was there like HCl, it will break Yes, off sir. completely, but the weak base won't break it. It will break. For that, we have to make another equation. So, like for that, if we want to break like both the weak base, sorry, both acid and base, so we have to take like strong base and strong acid both. Yes, you Okay, have to take I strong get. acid and strong base. Okay, I get it. Just like vice versa. Vice versa, like that. Now, coming to this NH4OH and HCl, they both are weak acid and weak base and weak acid. So we'll make separate equation for that. Now for NH4OH, NH4OH is actually weak base, which will have its own Kb, equilibrium constant. So this NH4OH will break like NH4 plus OH minus. Kb is there. So if we want to make its equation will be Kb is equal to NH4 plus into
OH minus divided by NH4OH. Let it be the second equation. Now coming to your weak acid, which is HCN, it will again follow its own law with Ka. So the equation will be HCN is giving you H plus plus Cn minus. Now making its Ka equation, Ka will be H plus into Cn minus whole divided by HCN. This is the third equation. Now if you see, if you multiply all the three, 2 1 into 2 into 3, you'll find a very peculiar thing. NH4OH, what I'm doing is KH into KA to KB is equal to NH4OH. You remember this one now? Kanishka, the H2O in the left, the above equation, KH equation, I have not taken H2O in the denominator. Why? Because H2O quantity is very large. Any change in this won't be appreciated, won't be appreciable, so we won't be considering it. Okay, sir. Now NH4OH into HCN divided by NH4 plus 2 Cn minus into Kb, K is what? H plus into Cn minus divided by SCN into Kb is what? NH4 plus into OH minus divided by NH4OH. Now see what we can cancel. NH4OH can be cancelled, HCN can be cancelled, Cn minus can be cancelled again, NH4 plus can be cancelled again. So what we are getting here, we are getting KH into Ka into Kb is equal to H plus into OH minus. But we already know this is ionic product of water, so it is Kw. Now we have got a relation here that KH is equal to Kw by Ka into Kb. Keep it inside a box. Okay. Okay, sir. Now coming to what we Like want. taking all these three equations like KH, Ka, and into KB, we have to multiply all those equations together. You have to all multiply all those equations together. Then you will arrive at this relation. Okay. After this, what we want to find out pH. So the pH we want now. So we have to take any one equation for OH. Ah, here actually how we do, we have to find pH. We'll make use of this first equation and for Cn plus H2O. Here, why I'm making use of this equation? Because I know earlier when they give me the question, in question they will be providing you the concentration of salt. This is your salt. Now C is the amount of concentration which is given to you. This is 0, this is 0. C minus C alpha, it gives C alpha, it gives C alpha. Now your KH value is equal to this NH4OH into HCN
by NH4 CN. This will be C alpha into C alpha divided by C into 1 minus alpha. Now KH is equal to C square alpha square by C into 1 minus alpha you are getting. C you can cancel out. There is one more thing that you can do, because 1 minus alpha is very small. So 1 minus alpha can be approximated to be equal to 1 in the denominator only. This approximation, remember, this approximation we can do only when this is in the denominator. Now KH will काम कर become, रही हूँ चाहिए KH is equal to C हाँ alpha square. 5 मिनट में दे देना So alpha will be equal to root over KH by C. So it will be KH, alpha is KH by C. Now, how do we find out pH? See, for pH, we can make use of equation number 3. We know, from the equation number 3, we know that HCN is giving us H plus plus Cn minus. This is Ka. Ka we can write as H plus into Cn minus divided by HCN. From here, if we see, H plus ion concentration will be Ka into HCN concentration divided by Cn minus concentration. And we know in a solution of this, HCN concentration is C alpha. HCN is C alpha. Cn minus is what it's. Array, NH4 C, I wrote one thing wrongly. So you have to use that equation now. NH4 plus Cn minus. This is C, this is again C. So the breaking will be C into C minus C alpha here of this. So now HCN concentration is C alpha, Cn minus C into 1 minus alpha, we can put it here. So H plus will be Ka in HCN is C alpha, Cn minus is C into 1 minus alpha. So this is this. 1 minus alpha again you can approximate to be equal to 1. So H plus becomes equal to K into alpha. Acha. KH value we have to put it like this. KW, because earlier we have found out KH is equal to KW by K into KB. So it will be KW by K into KB into C. Let's put it here. H plus will become Ka root over Kw by Ka into Kb to C. Feel I'm doing something. When I'm taking this equation now, one mistake I did. When I am taking this equation, I have calculated according to this. I have taken the equation without dissociating the equilibrium point.
the problem. Plus n minus c into 1 minus alpha into c into 1 minus alpha. Now it's correct. So kh will become equal to c square alpha square by c square into whole square. Kh is equal to alpha square. So alpha is equal to root kh. It will be root over kw by. Now okay. Now after that, c will go. So the value of h plus that you are getting is kw into k by q root over. Now you want to get pH. Kanishka, you are able to understand now the calculations that I am doing? Yes, sir. They are actually same. See, but one more thing I've said in the last class, this calculation that I'm doing is just to make you understand. The only important thing is the formulas that I box. Those formulas only you will be using to solve questions. I'll give you questions, don't worry. After this, I'll give you some questions on this hydrolysis. Now to find pH, pH is equal to minus log base 10 H plus ion concentration. So it will be minus log base 10 Kw into Ka by Kb whole power 1 by 2. Now let's take it outside. Minus 1 by 2 log base 10 Kw into Ka by Kb. It will become minus half log Kw plus log Ka. Let's write base 10 minus log Kb base 10. Kw we already know. Kw is 10 power minus 14. So it will be minus half log base 10 power minus 14 plus log Ka minus log Kb base 10. It will become minus half minus 14 plus log Ka base 10 minus log Kb base 10. Yeah, I would have done it directly also, but to make you understand, minus I'll take inside 7 minus 7 plus half minus log K base 10 plus half. Achha, let's write minus so that I can put minus both sides. Minus half into minus log KB base 10. So 7 plus half pKa minus half pKb. This is our pH value. If you want pOH, just minus it from 14 because we know the pOH, pH plus pOH is equal to 14 is there. So pOH will be equal to 14 minus pH. 14 minus 7 plus half pKa minus half pKb. The final answer that you are going to get is pOH value is equal to 7 minus half pKa plus half pKb. A bit lengthy one calculation.
These Yes, sir. It's these like bit confusing, but yeah, I still understand. Like this you, calculation you is very big. you see, if you are feeling it difficult, just remember those this box formula. It will work. You'll be able to solve the question. And if you are, but it's better to understand, because if you go for the complicated questions now, they will do something, they'll change something, change things. And if you remember, the pattern of calculation that I'm doing is same for every hydrolysis. What I'm doing is I'm breaking the salt, trying to break the weak acid or strong acid and strong base, weak acid and weak base. I'm making separate equation. Then using that, using those calculation, I'm trying to find out the pH. Whatever way you find out the pH after this framing these equations, you'll get the same value. And if you are feeling confused, it's a bit higher calculation, just leave it. Just try to remember these boxed formulas. Those only you'll be using. Just you have to identify the example I have given now. These example of weak acid and weak base, strong acid and weak base, and weak acid and strong base. Those examples that you have to remember, because in the example when questions they will be giving na, they won't tell which is the given salt is of weak acid weak base, or weak acid strong base, or strong acid weak base, whatever. But you have to identify, then accordingly you have to put the formula and then calculate pH. I'll give you one question with this. I'm giving. See, Kanishka इसको attempt करो. Try this. You need any formula, you just tell me, I'll show you. Okay, so wait, I have noted down this writing the last part. Wait, I have wrote it down like we have to multiply all those. Hmm. Did you Yeah, see? The important thing is, Kanishka, you have to yes, sir. write, you have to note these formulas. If you want, if you have not noted it down yet, note these formulas. This Oh, one, pH and pOH value for weak acid and weak base. This is for weak. Just make a heading for weak acid and weak base. These are the formulas. pH, pOH. yeah, like I was in the last one. I have just written all the things which you have wrote. You written na? Okay. Yes, For only this formula part. for Yeah, earlier, this one also one I have written. you have written earlier formulas. You Yeah. have written na? Yes, so those Good, good, good. three. Now see this. Just write these formulas pH and pOH. Yes. Okay, so then I will do the question. Then you can attempt them. After this, you have to just identify the salt which is given to you is of weak acid, weak base, or strong acid, weak base, what type. Accordingly, use the formula. Oh, okay.
कनिष्का नहीं आया क्या आंसर? सर आ गया सर, इज इट द ऑप्शन सी? करेक्ट। सिंपल फॉर्मूला यूज किया होगा ना वही वाला, यस सर। ये पी एच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी वाला। क्या? सर उसके ऊपर वाला pH इज इक्वल टू हाँ 7 ये प्लस हाफ ऊपर है, दैट वन। ये स्ट्रॉन्ग यस एसिड और वीक बेस है ना। यस सर। नहीं नहीं, ये वीक, दोनों वीक एसिड का है, आपने जो बताया। नहीं 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 गलत कर दिया तुमने, तभी तुम्हारा आंसर कैसे सही आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है कनिष्का। ओह नहीं नहीं, मैंने दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया है, वो वाला नहीं। मुझे लगा आप वो उसके लिए ढूंढ रहे, तो मैं बता रही थी। तो वो दोनों वीक बेस का है। हाँ क्योंकि देखो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, 1 माइनस यस हाफ पी सर। के बी माइनस हाफ लॉग सी। क्यों? क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि देखो तुम्हारे पास NH4Cl दिया हुआ है। देखो दिखाता हूँ तुम्हें, एक्चुअली NH4Cl दिया हुआ है। अब NH4Cl को जैसे ही देखोगे तुम तो ये क्या है, ये मिलके बना हुआ है किससे, NH4OH प्लस HCl से। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। तो आपको जो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में जो पीएच था वो था 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, 7। पी के बी की वैल्यू कितनी दी है, माइनस लॉग बेस 10, ये निकालना पड़ेगा तुमको, के बी इज 10 पावर -5 माइनस हाफ लॉग सी। लॉग सी इज 0.02, यानी कि 2 × 10 पावर -2। इसको कैलकुलेट कर, तो 7 प्लस हाफ इंटू -5 माइनस हाफ इंटू log 2 प्लस 1। इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास आंसर आएगा यही 5.35। क्या? एक काम भी करना, देखो एक एक और क्वेश्चन दिया है मैंने, इस क्वेश्चन को तुम होमवर्क की तरह कर देना। ओके सर। तो होमवर्क की तरह अटेम्प्ट कर लेना इस वाले चैप्टर में। बस ये कल क्लास, कल ही एंड हो जाएगा चैप्टर, फिर अपन रेडॉक्स स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास। ओके लेकिन कल सर। चैप्टर, कल क्या हो जाएगा इसमें, ये बहुत लेंथी चैप्टर है, यानी कि इक्विलिब्रियम बहुत टफ भी है बच्चों के लिए। कल इसमें बफर सॉल्यूशन और वो सब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करवाऊंगा मैं, फिर ये एंड हो जाएगा, है ना। चलो फिर एंड करते हैं। ओके सर। सर रिडॉक्स रिएक्शन में तो थोड़ा बहुत टेंथ का भी यूज हो रहा है, मतलब मेरे जो टीचर है वो थोड़ा बहुत टेंथ का भी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे तुम लोगों ने टेंथ में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पढ़ा है। अच्छा।